Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Yashodanandana Rajadanandana Yashodanandana Rajadanandana Jamuna Tiravana Tari Jamuna Tiravana Tari Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Yashodanandana Rajadanandana Yashodanandana Rajadanandana Jamuna Tiravana Tari Jamuna Tiravana Tari Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Jaya
Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Gaur Premanande. I am Vishwapad Paramahamsa Tri Vrajgacha Gusto Tarasatya Sri Srimad His Divine Grace Hirabai Charanaravind Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Ki Sandiviti Founder Charya Divine Grace Sri Prabhupada Ki Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Samabhata Bhaktivinoda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Tiny Taigo Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Guru Guru boys are coming in. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurundritam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vikam Sajivam Sadvaitam Savadutam Padisana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Sakambitam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Saptakantana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Tanamami Haripriya Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Jaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Shaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraya Nasta Prayasabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatu Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamritam Tamashloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Histraya Sayalokasya Dhanyam Swasyayanam Maha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sadhyaya Namaha. Om Sadhyaya Namaha. Om Sadhyaya Namaha. Mukham karoti vachalam tam Om Gangayate Girim Yatripa Tamam Bande Sri Gurum Dinataram Yatripa Tamam Bande Sri Gurum Dinataram. Hare Krishna. Welcome to our morning Bhagavatam class, reading from the first canto of the Bhagavatam, second chapter. Bhagavatam class is process of the Prasada or अभी पहले continue पर chapter 2, yes, for divinity and divine service and without divinity. What text did we do yesterday? We did 19. We did 19. So text number 20. Evam prasana manaso Bhagavat bhakti yogataha Bhagavat tattva vijnanam Bhakta sangasya jayate Evam prasana manaso Bhagavat bhakti yogataha Bhagavat tattva vijnanam Bhakta sangasya jayate Evam prasana manaso Bhagavat bhakti yogataha Bhagavat tattva vijnanam Mukta sangasya jayate. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead. In the stage of liberation from all material association. Report. In the Bhagavad Gita 7:3, it is said that out of many thousands of ordinary men, one fortunate man endeavors for perfection in life. Mostly men are conducted by the modes of passion and ignorance. And thus they are engaged always in lust, desire, hankering, ignorance, and weakness. Out of many such man-like animals,
There is actually a man who knows the responsibility of human life. And he tries to make life perfect by following the prescribed duties. And out of many thousands of such persons who have thus attained success in human life, one may know scientifically about the personality of Godhead, Sri Krishna. In the same Bhagavad Gita 1855, it is also said that scientific knowledge of Sri Krishna is understood only by the process of devotional service. The very same thing is confirmed herein in the above words. No ordinary man or even one who has attained success in human life can know scientifically or perfectly the personality of Godhead. Perfection of human life is attained when one can understand that he is not the product of matter, but is in fact spirit. And as soon as one understands that he has nothing to do with matter, he at once ceases his material hankerings and becomes enlivened as a spiritual being. This attainment of success is possible when one is above the modes of passion and ignorance. Or in other words, when one is actually a Brahmana by qualification. A Brahmana is the symbol of Sattva Guna. And others who are not in the mode of goodness are either Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, or less than the Shudras. The Brahmanical stage is the highest stage of human life because of its good qualities. So one cannot be a devotee unless one at least qualifies as a Brahmana. The devotee is already a Brahmana by action. But that is not the end of it. As referred to above, such a Brahmana has to become a Vaishnava. A Vaishnava, in fact, to be actually in the transcendental stage. A pure Vaishnava is a liberated soul and is transcendental even to the position of a Brahmana. In the material stage, even a Brahmana is also a conditioned soul. Because although in the Brahmanical stage, the conception of Brahman or transcendence is realized, scientific knowledge of the Supreme Lord is lacking. One has to surpass the Brahmanical stage and reach the Vasudeva stage to understand the personality of God. The science of the personality of Godhead is the subject matter for study by the postgraduate students in the spiritual line.
भगवान के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो पीटी कर रहे हैं जो भक्ति में उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं। Foolish men or men with a poor fund of knowledge do not understand the Supreme Lord. जो मूर्ख लोग हैं जिनको कम ज्ञान है वो भगवान को नहीं जानते। And they interpret Krishna according to their respective whims. और कृष्ण को अपने मन गढ़ंत तरीकों से निकालते बताते समझते। The fact is, however, that one cannot understand the science of the personality of Godhead unless one is freed from the contamination of the material modes. सच बात तो ये कि जब तक भौतिक चक्कर से गंदगी से बाहर नहीं कोई निकलेगा तब तक भगवान को समझ ही नहीं। Even up to the stage of a Brahmana. खुदों को बात क्या है ब्राह्मण भी कोई बन जाए तब भी नहीं समझ। When a qualified Brahmana factually becomes a Vaishnava, जब ब्राह्मण सही में वैष्णव बन जाता है तब क्या होता है? in the enlivened state of liberation, जब उस मुक्त अवस्था के स्तर पे पहुंचा होता है तब he can know what is actually the personality of Godhead. तब वो समझ जाता है कि वास्तव में भगवान व्यक्ति कैसे हैं। Very important verse, often quoted by Srila Prabhupada. बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रभुपाद जी बहुत इस श्लोक को कोट करते थे, उद्धृत करते थे। This is part of a series of verses that is explaining the scientific process of bhakti, devotional service. भक्ति के विज्ञान को इस श्लोक सिखा रहा है, इसमें सीरीज है इन श्लोकों का आगे इसके पीछे में आता है। Prabhupada actually explains how bhakti begins only after one is actually liberated from the modes of material nature. प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है जब आदमी भौतिक गुणों के चुंगल से मुक्त होता है। It is very, very, as mentioned here, very, very rare for someone to actually come to the stage of practicing bhakti yoga. कह रहे हैं यहाँ पे कि ये बड़ा बड़ा दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है कि कोई भक्ति के स्तर तक आके भक्ति को करना चालू करे। The vast majority of people in the material world, especially in Kali Yuga, are fully controlled by the lower modes of material nature. ज्यादातर लोग कलयुग में विशेष तौर से नीचे के गुणों के द्वारा संचालित हैं। So this is actually very confidential knowledge that Krishna is actually explaining to Arjuna in Bhagavad Gita. बहुत ही गौरव ज्ञान है, बहुत ही गोपनीय ज्ञान है जो कृष्ण गीता में अर्जुन को सिखा रहे हैं। Prabhupada used to explain that many people don't want to worship Krishna because they know that they have to give up all of their material attachments. प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत तो कृष्ण को इसलिए पूजा नहीं करते हैं कि पता है कि सब छुड़वा दे। And most people don't want to give up their material. लोग जानते हैं कि हमको छोड़ना है। Yes, there is, I think, a prayer. Forget exactly what it is. That describes how don't. Yeah. एक श्लोक है तो ये लिखा है कि केसी घाट मत जाना, कृष्णा को देखना मत, क्योंकि सारा बहुत ही दिक्कत है। So therefore, only those who are very serious to get out of the miserable condition that we find ourselves in the material world will take the bhakti. जो बहुत ही गंभीर लोग हैं, जो जान गए कि दुनिया बड़ा झमेला वाला जगह है, दुख वाला जगह है, वही लोग भक्ति लेंगे। So this verse especially is very has very deep meaning. बहुत गहरा मतलब इसका श्लोक। Evam prasanna manaso. Everyone is hankering to have peace of mind. हर व्यक्ति दुनिया में जो है केवल मन का शांति के लिए दौड़ रहा है। And the irony is that the more we endeavor materially to get peace of mind, the opposite happens. उल्टा पुल्टा क्या होता है देखिए कि जितना ज्यादा भौतिक चीज पीछे होता है, मन का शांति और नष्ट। The more we engage in material sense gratification, the more we suffer. ज्यादा इंद्रिय भोग में जैसे डूबता है आदमी उतना ही उसको भोगना चालू होता है। It is the hardest lesson to learn in material. सबसे कड़ा अनुभव है इस भौतिक जगत में, बहुत मुश्किल से मिलता है लेकिन मिलता है। Yeah. By nature we want to enjoy. हम तो सब भोग करना चाहते हैं। But if one
one does not know that he can enjoy spiritually, then he's stuck with enjoying materialism. जब उसको पता नहीं कि आध्यात्मिक रूप से हमको एंजॉय करना है, तो अगर पता नहीं और भौतिक में घुस गया एंजॉय करने की तरह, तो फंस गया। Yes. And to actually enjoy spiritually, to actually here, as mentioned here, to actually become peaceful in mind, we have to give up all material lower activities. और मन में शांति चाहिए तो सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। We have to. Evam prasanamanaso means that only when one is firmly established in the mode of goodness, his mind becomes peaceful. एवं प्रसन्न मंत्रों का मतलब है कि जब व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाता है, तब जाके वो शांति और सुख मन। That is generally the stage of one who is Brahmana. और ये वास्तव में ब्राह्मण दशा है। But here Prabhupada is telling us that's not the end of the story. प्रभुपाद करेंगे ये कहानी के अंत नहीं है, यहाँ शुरुआत है। That is the beginning of the story. ये शुरुआत है। Yeah, because only from the stage of Brahmana, from the mode of goodness, can we rise above. ब्राह्मण बन के हम ऊपर उठ सकते हैं। Yes. वहीं से रास्ता होता है। Only when we become situated in the mode of goodness, we can actually begin to nicely practice devotional service. सत्वगुण में स्थित होकर हम भक्ति को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। And it is only when we practice nicely devotional service, then Bhagavad Tattva Vigyanam, we will be enlivened, we will be inspired by super soul within the heart. जब भक्ति का अभ्यास हम करने लगते हैं, तभी जाके भगवान के वास्तविक स्वरूप को वैज्ञानिक ढंग से हमारे चित्त में प्राकट्य हो जाता है। Yes, most people are enlivened by Madan. दुनिया में ज्यादातर लोगों का जो प्रेरणा है वो मदन में। Yes. मदन मतलब काम है। The most attractive feature in the material world is sex life. दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षक चीज जो है तो मैथुन जीवन। Yes, and because majority of people don't know about the attractor of Madan, ज्यादातर लोग ये नहीं पता है मदन को भी आकर्षित करने वाला कोई है। they are captured by Cupid. क्योंकि वो लोगों को पता है कि मदन को कौन आकर्षित करता है, इसलिए वो लोग मदन में ही जाके अटक जाते हैं। Madan is very expert in shooting his arrows. मदन जो है तीर मारने में बड़ा तेज। And people become enamored, right? और लोग जो है उसमें भ्रमित, सम्मोहित, मोहित हो जाते हैं। In Kali Yuga especially, people are constantly falling in love and falling out of love. दुनिया में कलयुग में लोग प्यार में गिरते हैं और प्यार से बाहर गिरते हैं। It is not uncommon in America for people to get married 4, 5, 6, 7 times. अमेरिका में 4, 5, 6 बार शादी होना कोई बड़ा Still they're not happy. फिर भी वो सुख नहीं है। So real happiness comes actually when we cultivate transcendental knowledge. असली सुख तब मिलेगा जब दिव्य ज्ञान को आप लोग पढ़ना चालू करिएगा। Only one who practices spiritual life, not just any spiritual life, but devotional life. जब कोई आध्यात्मिक जीवन, खास करके आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी आध्यात्मिक में नहीं चलेगा, खास करके भक्ति में आध्यात्मिक जब करेंगे तब जाके। Srimad Bhagavatam explains about 3 levels or 3 types of happiness. प्रभु गोस्वामी 3 तरह के सुख की बात करते हैं। Material happiness, spiritual happiness, and भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख और devotional happiness. और दिव्य भक्तिमय सुख। Only devotional happiness can actually fully satisfy the spirit soul. केवल और केवल भक्ति का जो सुख है वही जीव को पूरी तरह से सुखी कर सकता है। And it is only this devotional service or devotional happiness that can actually liberate us from this material world. और ये जो भक्त्यानंद है, यही केवल हमको इस दुनिया से निकाल सकता है, जड़ानंद और ब्रह्मानंद नहीं निकाल। Yes, that is what is taught traditionally in Gurukula. और यही गुरुकुलों में पहले सिखाया जाता है। Even before learning Shastra, शास्त्र पढ़ने के पहले ये सिखाते। so much knowledge is there, so many sciences are there in the Shastra. One learns to develop what is called this mood of service. सबसे पहले बच्चों को सेवा का भाव सिखाया जाता है। Seva is actually the essence of bhakti. सेवा ही भक्ति का सार है। Yes. That is the foremost aspect in Gurukula.
understanding our position of being a servant. गुरुकुल के शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि सेवक बनना और सेवा का भाव समझना। And in this way, engaging with a very peaceful mind in activities for pleasing the Lord. तो बहुत शांत मन से भगवान के प्रसन्नता के लिए सेवा में लगना। So this verse is clearly establishing that it is only this type of activity, pure devotional service, that can bring one to the stage of liberation from this material world. और इस तरह की जो कार्य हैं, जो भक्तिमय सेवा, वही व्यक्ति को मुक्ति का रास्ता देता है। So this verse also explaining that anyone who takes up this process is a very rare person, a very rare person. ये श्लोक ये भी कहते हैं कि जो भक्ति में आ गए हैं, बड़े-बड़े दुर्लभ लोग। Yes. So all of you who are here are very rare. आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, बड़े दुर्लभ लोग। Yes. Very rare means very fortunate. मतलब दुर्लभ का मतलब लोग बड़े भाग्यवान। Like that on that. Take a few प्रश्न minutes for पूछना some है कि questions. क्वेश्चन। Three modes. Three modes. That become free from them. Yes. But here we see that they're trying to still we have to use things like this, the data, so all this stuff. I was just thinking about castor oil this morning. प्रश्न है कि हम लोग गुरुकुल चालू करना चाहते हैं, गुरु से ऊपर निकलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जनरेटर यूज कर रहे हैं। महाराज कह रहे कि सुबह में सोचा था कि अरंडे का तेल यूज करना है। I was hearing the generator. Generator is like what is called noise pollution, right? जनरेटर There's Tractasura and Generatorasura. Tractasura, tractors. These are all, yes. So what's your question? Like for the sake of service, we are using it. How we can come to that we can do our things because we are attached to these things. We have come from the city life. So we need power. Yeah, so the whole idea is to become detached. तो पूरा मतलब ये कि छोड़ दो सब कुछ। Yeah. इन चीजों को छोड़ दो। By cultivation of knowledge, this is explained nicely in the Bhagavad Gita. ज्ञान का उदय करिए। Yeah. Idam Jnanam Upasritya, that is 14, what is it, 14.2. Idam Jnanam Upasritya Mama Sadhana Arataha. By cultivation of this knowledge, Krishna is explaining to Arjuna, you will attain my nature. ज्ञान अगर आपको आसक्ति है तो महाराज जी कह रहे हैं कि आप ज्ञान अर्जित करिए, पढ़िए भागवत में गीता में, तो आपका आसक्ति कटेगी। So it is true, majority of us are coming from this very bad background, very conditioned life. But the more we cultivate, the more seriously we apply the process, we will gradually become detached. लेकिन जितना हम ज्यादा, ये बात सही है कि हम लोग उसी दुनिया में से आए हैं, आसक्त दुनिया से, जितना ज्यादा ज्ञान हम निकालेंगे, उठाएंगे, उतना हम खुद अनासक्त होंगे। Now we're using the generator, but if we're nicely cultivating this knowledge, we will understand that actually maybe tomorrow that petrol will not be available. अगर आपको सच में ज्ञान नहीं पता होना चाहिए, कल शायद पेट्रोल ना मिले। So I should be growing castor. इसलिए हमको कैस्टर का जो पेड़ है, अरंडे का जो पेड़ है, वो लगा के फूल रख लेना चाहिए। Yeah. कल वही बीज जला के करना पड़ेगा। It is part of returning, coming back to the more natural Vedic way of living. प्रकृति में लौट जाओ, चल तरीका है। In one sense, the longer we delay, the more we are kind of gambling. जितना लेट करेंगे, उतना अपने आप से जुआ करेंगे, धोखा देंगे अपने आप। Yeah. So growing our own food, अपना खाना उगाइए, growing our own flowers to अपना फूल offer, उगाइए,
these things we should be increasing more and more. Yeah. Prabhupada explained that actually, as devotees, as community of devotees, we should become totally independent from the fallible material situation. प्रभा जी कहते हैं कि कम्युनिटी के रूप में, एक समुदाय के रूप में आपको पूरा दुनिया से अपने आप को डिटैच होकर अपने पैर पे खड़ा होने का. Yeah, even many years ago, Prabhupada was mentioning how in Sri Ramayapur we should have our own currency. Chaitanya currency. प्रभुपाद ने कहा कि हमारा अपना करेंसी होना चाहिए. हरिबो अपना नोट छापना चाहिए हम लोग को. अपना नोट चाहिए. हरिबो Chaitanya currency means Chaitanya नोट होगा. what is coming from the garden, not from the what is coming from the garden. What is growing. No currency नोट है हमारा. No. महाराज करें चैतन्य करेंसी का मतलब होगा जैसे फूल बेच दिए, फल बेच दिए, ये चैतन्य करेंसी हो. Yeah. Tangible things that you can. वास्तव में चीजें होंगी, कागज नहीं होगा. कागज छपा हुआ कागज वास्तव में चीज होगी. Yeah. It's just a question of practicing and applying more seriously, then result will be there. आप उसको इतना डरिए नहीं, उसको बस अप्लाई करिए, अपने जीवन में लगाइए, आपको रिजल्ट दिखेगा. Yeah, the more we are actually convinced that what is there in the Shastra is true, then we will do. अगर आप ये मानते हैं कि शास्त्र सही है, तो होगा ही. We're still not fully convinced. हमको अंदर से दिल से अभी तक तसल्ली हुआ नहीं कि मानने नहीं होगा सर. Prabhupada even says actually majority of people don't want to go back home back. पापा ने भी कहता है ज्यादातर लोग जो आए हैं भगवत हम जाना ही नहीं चाहते. It's not that bad after all here. In the material world, it's not that bad. इतना भी बुरा नहीं है भौतिक जगत जितना कि लेक्चर में लोग बोलते हैं. थोड़ा मोड़ा ठीक भी तो है. Unless one becomes completely disgusted with this material world. जब तक इस दुनिया से भरोसा नहीं उठेगा तब तक. Yeah, unless one, as Prabhupada would say, quoting I think unless one becomes disgusted with sex life. जब तक कोई मैथुन जीवन में थो नहीं करेगा, यमना चाहिए. Unless we become completely convinced that there is no happiness in the material world. पूर्ण रूप से सहमत नहीं कि दुनिया में कोई सुख नहीं है. It's all a mirage. ये सब भूल भुलैया है. Wonderful mirage. एक मिर्ग तृष्णा है, एक भूल भुलैया. But it is false. बड़ा सुंदर दिखता है और ये झूठ है. Any other? कोई प्रश्न? Maharaj, people come in bhakti, but how to go ahead in bhakti? That is the problem. How to go ahead? Yeah. How to go ahead? See, everyone expects, it's just like when you put a seed in the ground, you can't expect that flower to come up immediately. बीज डालने के बाद एक दिन में फूल थोड़े निकल जाता है. One has to water nicely, care, gradually, slowly, gradually. पानी डालोगे तो धीरे-धीरे. So we've all come to the path of bhakti, and bhakti के रास्ते में स्वागत है. Depending on how we apply the process, how we feed this this seed of bhakti, how we nurture. भक्ति के बीज को जैसे आप पानी में डालेंगे वैसा वैसा बढ़ेगा. We need to protect our bhakti lata beej. भक्ति लता बीज को आपको बचाना पड़ेगा. Yeah, so that comes by proper application, proper association, avoiding offenses, all these things. आप अच्छा संग करिए, अपराधों से बचिए, तब होगा. Is it? सही. और प्रश्न है. बोल. How one can stay in Sattva-guna while performing? Stay in Sattva-guna while performing worldly duties. Most important is that every day one needs to have a strong, regular, daily devotional or spiritual program. सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा रोज का नित्य आध्यात्मिक कार्यक्रम होना चाहिए, जैसे मंगल आरती है. Yes,
morning program will help us maintain a proper level of consciousness in the whole day. और ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो है हमारा चेतना को दिन भर जो है सही बनाए रखे. Yes. So that morning program means, Mangalarti, chanting and hearing Shravanam Kirtanam, most powerful and important. मंगल आरती, जप, श्रवण, कीर्तन, यही तो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है. And that if we don't do that, then because the influence of Maya is so powerful in the ordinary material world, will be affected. और अगर हम सुबह के समय सो जाएंगे तो दुनिया के गुणों से हम प्रभावित हो जाएंगे. Yes. The Koti group was on that there's three kinds of happiness. Yes. Even happiness, spiritual and devotional. Yes. Explain a little bit what the difference between spiritual and devotional. Yes. You want to translate? Question? Oh, the question he's telling that ये प्रश्न है कि आध्यात्मिक आनंद और भक्ति के आनंद में क्या फर्क है? There's a big difference. I mean, बड़ा फर्क है. Yeah. So when Srila Rupa Goswami speaks about spiritual happiness, he is referring to Brahman realization. जब रूप गोस्वामी आध्यात्मिक आनंद की बात करते हैं तो ब्रह्मानंद की बात करते हैं. Aham Brahmasmi, that is the beginning of spiritual life. हम ब्रह्मोस्मी जो है वो Aham Brahmasmi means we understand we are different from this body. हम इस शरीर से अलग हैं ये पता चलता है. That will bring us to Brahmananda, Ananda or happiness of Brahman realization. और वही ब्रह्मानंद का अनुभव कराता है. But that is not permanent. वो शाश्वत नहीं. Because there is no activity in that Brahman realization. कार्य कलाप नहीं. So therefore, Srila Rupa Goswami, all the Goswamis of Vrindavan have been, that was their primary service, as requested by Lord Chaitanya Mahaprabhu, to excavate, to take out all of the different references that are referring to what is above Brahman realization, which is Bhagavan realization, which brings one from Brahmananda to Premananda, Prema. Brahman realization is a preliminary step. If one is fortunate to come in contact with Vaishnava, then you can come to Premananda realization. चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को सेवा दिया था कि जाके वृंदावन में बैठ के अलग अलग शास्त्रों को खोज के निकालो कि कौन से श्लोक है जो ये कहते हैं कि ब्रह्मानंद के ऊपर भक्ति आनंद है. Because in Brahman realization there is no exchange, isn't it? It's like it's a stale kind of oneness which cannot last. ब्रह्मानंद अवस्था में तो ऐसा है कि वो तो ऐसा है कि हमेशा रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं. There is no rasa actually. रस नहीं, किसी तरह लेन देन अनुभव प्रदान नहीं. Our Goswamis of Vrindavan have, and Lord Chaitanya Mahaprabhu, following in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu, have revealed and opened up the whole, what is it, storehouse of rasa, the storehouse of चैतन्य महाप्रभु ने रस के भंडार को खोल दिया. Yeah, and that ultimate perfection or level is attained in what is called prema, pure love of Krishna. और वो जो परम स्तर है वो प्रेम में हमको प्राप्त हो जाता है. And it is experienced in the different the 5 primary rasa. अलग-अलग 5 रसों में उसका अनुभव. That is totally unknown to those who are into Brahman realization. ब्राह्मण वालों को पता ही नहीं इसके बारे में. At best, they will merge as we read, as we understand. They will merge in Brahmajyoti. लोग मिल जाते हैं बस. How long you'll stay there? What you'll do there? Nothing to do there. कुछ करने के लिए नहीं. Therefore, the title of Sri Rupa Goswami's most important book is Bhakti Rasa Amrita Sindhu. गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु किताब लिखा है. Yeah,
that is a science that is unknown to those who are Brahmavadis. जो विज्ञान है जो ब्रह्मवादियों को पता ही नहीं। That is very, very unique. That is the special feature and quality and treasure of Vaishnavas. वैष्णव का जीवन का सबसे बड़ा धन है। Okay. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Neki. Jai Sri Prabhupada ki. Jai Jai Gaura Ki.